So like I was saying, our beliefs, they have a very significant impact on our life. All right, जो हमारी beliefs, I don't know the Hindi word, probably हम उसको मान्यताएं कह सकते हैं, जिन बातों को हम सच समझते हैं. सच नहीं है जरूरी, मगर हम उनको सच समझते हैं और उनका काफी बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन पे. एंड ये we have understood this in many sessions कि भाई क्या प्रभाव होता है. Alright, तो self-esteem is also a kind of self-belief. So self-belief is the way you value yourself. And another way of saying that would be self-esteem is the way that you see yourself. And the way you see yourself is the way you treat yourself. And the way you treat yourself is the way you treat others. And the way you treat others is the way they will treat you. So ultimately, you end up proving to yourself whatever you believe about yourself. अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका अभी कोई सेल्फ बिलीफ बना नहीं है. Alright, so they are free and they are complete and they only experience themselves as whole and complete and powerful. तभी आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, they are like really self-expressed. They are enjoying themselves. They can do anything. अभी तक उनके दिमाग में ये नहीं डला है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते और तुम वो नहीं कर सकते और तुम ये हो और तुम वो. So that's why I am a very firm believer that who you are is a wonderful, magnificent, and an extraordinary human being. Because that's the way you were born. That's the way you were created. Because अब जो हमारे परमात्मा हैं, वो imperfect चीजें नहीं बनाते. अगर आपको यकीन है कि अगर कोई परमात्मा है जिसने आपको बनाया है, तो वो डिफेक्टिव पीस नहीं बनाएगा. और कई लोग सोचते हैं यार मेरे केस में गलती हो गई. Okay, so something has happened कि हमने ये मानना छोड़ दिया है कि मैं एक वंडरफुल, मैग्निफिसेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हूं. भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो मान लीजिए, मतलब आपके जैसा कोई इंसान तो है नहीं दुनिया में. तो जब मुझे किसी ने ये कहा था, मैं कहा बिल्कुल मेरे जैसे तो कोई नहीं है, क्योंकि सारे मेरे से तो अच्छे ही हैं, इसलिए मैं यूनिक हूं. Have you noticed कि ये जो तराजू है हमारा, जिसमें हम अपने आप को तोलते रहते हैं, am I good, am I bad, am I right, am I wrong. और आप देखिए उस तराजू में, जैसे हम तराजू में तोलते हैं तो एक वेट डालते हैं, ऑलराइट, तो एक डिपार्टमेंट ऑफ वेट एंड मेजर उसको सर्टिफाई करता है कि भाई ये वेट सही है. ओके, बट हमारी जो बिलीव्स हैं, क्योंकि हमारे जो बट्टे में जो हम डालते हैं स्केल में, तो उधर तो वो बिलीव्स ही है ना. तो वो बिलीफ ही अगर गलत है तो दैट मीन्स कि हमारा जो तोलने का तराजू है वो भी तो गलत है ना. So for some reason, this, and believe you me, this is, I can say to you, after some practical experiments in more than I think 4,000 or 5,000 programs. क्योंकि मैं एक्चुअली एक डॉक्टर डेविड मैकलेलन साहब हैं, उन्होंने एक टूल बनाया था जिससे कि लोगों का सेल्फ एस्टीम मेजर किया जा सके. और उस टूल से जब लोगों का हमने मेजर किया तो हमने ये देखा कि इतने अकम्प्लिश्ड लोग, वेरी सक्सेसफुल पीपल,
IITs, IMMs, even PhDs, right? They have such a low self-esteem when you measure it. And I always say to them, okay, boss, whatever you have been thinking about yourself, whatever your self-esteem is, you've done so well in your life. You're so qualified and so successful, and you're holding such a wonderful position. What will happen when you see yourself as this wonderful, magnificent, extraordinary human being, which you are? जो भी आपकी सोच रही हो, आपने फिर भी इतना अच्छा किया. आप समझ लो, एक आदमी की अगर सेल्फ बिलीफ कम हो, उसको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना. तो शायद ये बात काम आ गए उनके. बट सोचने वाली बात है कि व्हाई इज आवर सेल्फ एस्टीम और आवर सेल्फ एस्टिमेट और आवर सेल्फ जजमेंट, या जो आत्म सम्मान हम जिसको कहते हैं, ऐसा क्या हो गया हमारी जिंदगी में कि वो कम हो गया और उतना नहीं है जितना होना चाहिए. तो कई लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मेरा तो कम नहीं है. तो ठीक है सर, कंग्रेचुलेशंस. चेक वन थिंग, this brain number 2 of yours, which is always judging, analyzing, okay, putting you in right and wrong, good and bad, कितने self doubts आते हैं हमारे को. So let us make this a practical program rather than a theoretical one. Tell me honestly, हम लोगों को self doubt आता है कि नहीं? Very much. Okay. तो ये self doubt क्यों आता है? Even though we have a lot of evidence in our life that we have done many good things. One day in a program, I made people make a list. मैंने कहा इसमें अपनी एक लिस्ट बनाओ कि जो छोटी और बड़ी अकम्पलिशमेंट्स रही हैं आपकी लाइफ में. तो लोगों ने बनाना शुरू किया और 4 और 5 आइटम्स ही आए, क्योंकि जो हजारों अकम्पलिशमेंट्स उनकी थी बचपन से लेके बड़े होने तक, उन्होंने कभी उनको अकम्पलिशमेंट्स ही नहीं माना. तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो कौन सी अकम्पलिशमेंट्स हैं हमारी, वो कौन सी कामयाबी हैं हमारी, जिनको हमने कामयाबी नहीं समझा? अरे वो तो नॉर्मल है. कैन यू टेल मी, वो कौन सी कामयाबी हैं जिनको हमने कामयाबी ही नहीं समझा? We started reading and writing, that itself is an accomplishment, but we don't consider it. Don't consider it. You started walking. Yes, we started walking. We started listening. We started. Yeah, the first time you said the word ma or pa or whatever, that was also an accomplishment. And if you start listing down your accomplishments in life, they will be much more than the number of failures you've had in your life. True. मगर हमने कभी ये किया है क्या? क्योंकि for some reason there is some sort of a mechanism in our brain जो हमेशा अपने आप को थोड़ा डाउन ही करता रहता है और एविडेंस ढूंढता रहता है कि आई एम नॉट गुड इनफ. It's comparing with others. Yeah, whatever. So it started, no? At some age. Yeah. I remember my elder son rang me up one day. Arey, Papa, Johan has started walking. He was so excited. Johan has started talking. And you know, when we were children, we were very excited about it. मुझे अभी भी याद है कि जब हम छोटे थे, हमें से सीटी बजाना नहीं आता था. ठीक है ना? अब वो मैं और मेरे फ्रेंड थे,
जो अभी एज अ जनरल रिटायर हुए हैं, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे 4-4 साल के, हम दोनों बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे. And then finally when we started whistling, yeah, we were very excited by our accomplishments. So the purpose of this session is for us to realize that, okay, what happened in our life? That my self-esteem is not as high as it should be. Why is it that I don't see myself as this wonderful, magnificent, extraordinary human that I was created to be? ऐसी कौन सी मिट्टी जम गई है मेरे ऊपर कि जो मैं नगीना हूं वो नहीं दिखाई देता मुझे. I hope you can see this. And gentlemen and ladies, please feel free to interrupt me and ask me questions or anything you want. Because we've got a very accomplished audience. All right? यहाँ पर काफी ज्ञानी लोग भी हैं, मेरे साथी जो हैं. So please interact if you wish. And let's see what we come out with. I don't want this to be a bloody lecture session. So self-esteem is the way you see yourself. जब आप अपने आप को देखते हो, आपको क्या दिखाई देता है? And the way you see yourself is the way you treat yourself. आप सोचिए, अगर आप सोचते हो कि अरे यार ये मेरे बस की नहीं है, ठीक है, तो आपका व्यवहार यही होगा ना कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता. और दुनिया भी यही देख रही है. और आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आपको लगता है अगर मैं नहीं कर सकता तो शायद दूसरे भी नहीं कर सकते हो. So the way you treat yourself is the way you treat others. So if you don't believe yourself, आपको अगर खुद पे एतबार नहीं है, आप दूसरों पे एतबार कर पाओगे? And the way you treat others is the way they treat you. So this is a self-fulfilling prophecy. जो आपकी मान्यता है उसको आप साकार करते रहते. So there are many things which happen. Now all of you and I, we've had a kind of journey in our life, and this journey has been one set of experiences, one after the other. And in every experience, we have made certain decisions, we've made some beliefs, and we've made some conclusions. Would you agree with me on that? Yes. कि जब मैं छोटा था, एक बार पिताजी ने थप्पड़ मारा और बोला कि यू आर अ ब्लॉट ऑन द नेम ऑफ द मलवाई खानदान, राइट? तो मैंने क्या कंक्लूजन बनाया होगा अपने बारे में? कैन यू गेस? नो गेसेस? आई एम यूजलेस. हाँ. एंड दूसरा क्या है? माय फादर डजंट लव मी एनीमोर. मैं बदमाश ही हूँ सर. हाँ जी, मैं बदमाश ही हूँ. हाँ, मतलब शैतान हूँ या बदमाश हूँ या जो भी हूँ जी, है ना. मैंने तो भाई नाक कटा दी अपने खानदान के, और क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मेरे पिताजी ने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया. तो मुझसे हमेशा यही हुआ है लाइफ में, एक साइकिल बनी है. अगर कभी गलती हो गई किसी, क्योंकि लाइफ में तो हो ही जाती है कभी ना कभी, तो मुझे और मेरे किसी सीनियर को पता लग गया या वाइफ को पता लग गया और वो नाराज हो गए मुझसे, तो इमीडिएटली मेरा मोटर अंदर क्या बोल रहा है? बेटा हो गया काम तेरा, आप ये नहीं प्यार कर रहे थे, यू आर नॉट वर्दी ऑफ देयर लव एनीमोर. नाउ अ पर्सन
who thinks that he's not worthy of people's love, is his self-esteem high or low? Low. And so many other things we are picking up, all right? So मैं इसकी एक क्लासिफिकेशन कर रहा था कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं लोगों के साथ जिसकी वजह से उनका सेल्फ बिलीफ या सेल्फ एस्टीम वो कम हो जाता है. So the first thing is inhibition. So what is the inhibition? Inhibition is a false belief which you hold to be true because somebody told you and you became like that. For example, I'll tell you, जब हम छोटे छोटे होते हैं और सबसे बड़े बच्चे होते हैं और घर में गेस्ट्स आते हैं, ठीक है ना, तो आपको बुलाया जाता है, ओ दिस इज आवर एल्डर सन, है ना, फिर वो बोलेंगे किट्टू नमस्ते करो, से गुड इवनिंग, राइट, सो आई से गुड इवनिंग अंकल, वो सब बोलेंगे व्हाट ए स्वीट बॉय, फिर बोलेंगे बेटा पोएम सुनाओ, ठीक है ना, जब आप पोएम भी सुना देंगे, या वेरी नाइस वेरी नाइस. उसके बाद मम्मी बोलेंगी अच्छा बेटे नाउ यू गो इनसाइड, ओके, तो बड़े बात कर रहे होते हैं ना, यू शुड नॉट सिट ओवर, ठीक है जी, हम चले गए अंदर. तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, जब भी कोई विजिटर आएंगे हम अपना नमस्ते करेंगे और अंदर चले जाएंगे. ठीक है, किसने बोला था ऐसे करने के लिए? पेरेंट्स ने बोला था, बट वही पेरेंट्स अब लेबल लगा रहे हैं, अरे ही इज अ वेरी शाई बॉय, व्हेन पीपल कम होम ही गोज इनसाइड. तो पहला मैंने अपना बिलीफ बना लिया, ओ आई एम अ शाई बॉय, कुछ तो गड़बड़ है, तो -10 मार्क्स दे दिए अपने आप को कि दैट इज एन इनहिबिशन. एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड बिलीविंग इट दैट आई एम शाई एंड आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ शाई पर्सन. अब व्हेन यू आर अ स्मॉल चाइल्ड यू आर वेरी क्यूरियस, एटलीस्ट आई वाज. तो क्यूरियस क्या करते हैं बच्चे? बड़े प्रश्न पूछते हैं. और जो अडल्ट होते हैं उनके पास पेशेंस होती नहीं है, होती है मगर एक हद होती है उसकी. भाई ऐसा क्यों होता है, आप वहाँ क्या कर रहे हो, आप दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे. तो बोलेंगे शट अप, यू टॉक टू मच. चलो जी, एक और लेबल लग गया, यू टॉक टू मच. फिर हमने एक और निर्णय ले लिया, अच्छा आई टॉक टू मच, दैट इज नॉट गुड, सो बेटर टू कीप क्वाइट. I used to get lots of ideas and I used to say, and my father used to say, forget it, what are these stupid ideas you have? अब बड़े होके मालूम पड़ा है कि भैया आइडियाज का प्रीमियम होता है, और कई absurd आइडियाज जो होते हैं वो इतने absurd होते ही नहीं है. I remember we were in a place called Bucklow. I was very small, 1956 or something. I must have been 3 years old or something. So I was telling my daddy, कि ये जो रेडियो है इसमें if you could see pictures in it. And he says, what nonsense you're talking. So now we see pictures on your laptop, on the TV and everywhere. So inhibition is when you're stopped or when you're told negative things about yourself and you believe something. Another one I'll tell you, very interesting. I used to go to school in Secunderabad. So badi achhi teacher thi sab. So I used to love to go to school. She was a very kind and loving person she was. One day poor lady got replaced. Bimar ho gayi hongi. So one temporary teacher came. And I don't know why that temporary teacher, suddenly she scolded me. ठीक है, तो हम घर आए जब रोते रोते, so I told my mom I'm not going to go to school tomorrow. Why? Because a very bad teacher. Oh, ठीक है. Now, unfortunately, that same evening, I got some temperature also. And then my mom is telling my dad, oh, Kittu is a very sensitive boy. He got sick because the teacher scolded him. Now, another label. So you start looking at the number of times these little incidents, they've been eroding our self-belief. तो अगर मैं एक विचित्र प्राणी हूँ, अद्भुत प्राणी हूँ,
जो भगवान ने बनाया है, अब मेरी जो खुद के बारे में मान्यताएं हैं वो जरा नेगेटिव होनी शुरू हो जाती। फिर हम एक और ड्रामा करते हैं लाइफ में, दिखावा करना शुरू कर देते, एग्जीबिशन। तो जब हम स्कूल गए अमृतसर में तो बच्चे हंसते थे हमारे ऊपर। वो इसलिए हंसते थे कि भाई हमको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, पंजाबी नहीं आती थी, हम सिर्फ अंग्रेजी में बात करते थे। तो बोलते थे आ गया अंग्रेज, तो दोस्ती नहीं करते थे। मैंने सोचा कि भाई अच्छा, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। क्लास 1-2 में मैं काफी बुक्स पढ़ता था। तो मैंने जाके फिर एग्जीबिशन करनी शुरू कर दी। अरे तुमने ये बुक पढ़ी है, तुमने वो बुक पढ़ी है। और जितना ज्यादा हम एग्जीबिशन करते थे वो उतना ज्यादा मजाक करते थे। फिर हमने पिताजी को मनाया, बड़ा महंगा 300 रुपए का। उस जमाने में ना 100 रुपए की साइकिल आती, और 300 रुपए का उन्होंने मुझे क्रिकेट सेट खरीद के दे, विद पैड्स एंड बेल्स एंड विकेट कीपर ग्लव्स एंड एवरीथिंग। तो हमने सोचा बच्चे हमारे साथ खेलेंगे, कि हमारे पास इतना क्रिकेट सेट है। हाँ बिल्कुल जी, खेलते थे, हमारे सेट के साथ खेलते थे, हमसे फील्डिंग कराते। तो एक और वो एग्जीबिशन का नतीजा ये हुआ कि एक और मान्यता बन गई हमारे दिमाग में कि बस अगर तुम लोगों से अलग हो तो वो तुमको पसंद नहीं करेंगे, तो साधारण हो जाओ। और दूसरा ये बन गया कि लोग मेरा बड़े आराम से उल्लू बना सकते हैं, मैं बड़ा बुद्धू हूं। See how this belief system is getting formed. And this is false. Then obviously we face a lot of this prejudice in life. So I don't think I need to explain to you. कि prejudices जो होती है ना, बड़ा weird behavior करवाती है हमें। आपको पता है सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कलर prejudice कहाँ पे? You're supposed to answer that one. सबसे ज्यादा कलर प्रेजुडिस का है। आपको पता है कौन से देश में आपको मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट मिलेगी? वांटेड मिल्की वाइट ब्राइड फॉर वीटिश कंप्लेक्शन्ड ब्राइड ग्रूम। ठीक है ना, काले को काला भी नहीं बोल सकते। बिगेस्ट कलर प्रेजुडिस यू विल फाइंड हियर। तभी वो व्हाइटनिंग क्रीम इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है। मतलब सुअर जैसी शक्ल हो मगर अगर गोरियां हैं, आय हाय हाय, बट कोई अच्छा सुंदर इंसान हो, रंग सांवला है तो वो तो काली है। तो प्रेजुडिस मेक्स पीपल डू सम वेरी वेरी वियर्ड थिंग। तो हमारे एक मित्र थे और हमारे साथ ट्रेनर भी थे। हमने कम से कम 17 मुल्कों में ट्रैवलिंग करी उनके साथ। ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, मतलब इतना हेल्पिंग, इतना काइंड आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। बट उसमें एक बुनियादी नुक्स था। आप उसके साथ 5 मिनट बैठ जाए, आपको मजाक कर करके आपको रोला भी सकते, और उसको कोई कंट्रोल ही नहीं था इस चीज के बारे में। तो एक दिन हुआ ये कि हम लोग लाओस में थे और एक फॉरेन लेडी आई थी वहां से, अमेरिका से, हम लोगों की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए। तो ये सब उनके सामने भी मजाक शुरू। दैट वाज अ वेरी ओल्ड लेडी, वेरी सीरियस टाइप ऑफ पर्सन। तो हमारे जो दोस्त हैं सीरियस लोग, उसके लिए चैलेंज होता है कि मैंने तो इनको हंसाना ही है, अब हंसाओ भैया, बट नॉट एट आवर कॉस्ट ना। अब वहाँ लाओस में हमको मिलते थे $120 a डे अलाउंस, और वहाँ $50 वाला जो है राजा होता है। तो हम लंच पे जा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं हाँ ईट ईट यू बगस यू गेटिंग $200 है। So we were finding it very uncomfortable. और एक हमारे साथ साउथ इंडियन थे और ये खुद भी साउथ इंडियन है। तो जब वो साउथ इंडियन साहब बोल रहे थे तो वो थोड़ा साउथ इंडियन एक्सेंट में बात करते हैं। प्रोफेसर है, राइट, PhD in mathematics and all, brilliant guy. But this fellow sitting at the back taking notes,
और जब ये सेशन खत्म हुआ तो उसको बोलते हैं फॉरेनर के सामने, आफ्टर यू कॉल योरसेल्फ एन इंटरनेशनल ट्रेनर, 40 times you pronounce English word. अब उसकी खुद की प्रोनाउंसिएशन को दूसरे को बोल रहे हैं, तुम एलो बोलते हो, एट बोलते हो, एस्टरडे बोलते हो. So in the evening, we all 3 people decided कि आज हमने इसको छोड़ना नहीं है. तो उसके रूम में गए, हमने खूब उसको बैंजो रैंजो मैंजो टैंजो सब बोल दिया. और ये इंसान काफी, दैट टाइम ही वाज 56 years old, तो रोना शुरू हो गया. मैं कहा अभी तेरे को रोना आ रहा है? सबके सामने जो तो हम लोगों को खिल्ली उड़ा रहा था, तब तेरे को रोना नहीं आ रहा था? यू नो आई डोंट मीन इट, यू डोंट नो व्हाट इज लाइक टू ग्रो अप इन इंडिया. तो मैंने कहा उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है? कहता नहीं, बिकॉज जब मैं छोटा था लोग मेरा मजाक उड़ाते थे. किसकी वजह से? मेरे कलर की वजह से. अब बेचारा इतना काला था कि तवा भी गोरा लगे उसके सामने. बट हमने सोचा इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि खुद ही जोक्स क्रैक करता था अपने ऊपर. तो वन ऑफ हिज क्लासिक जोक्स, he used to say, if you take my picture in color, it will come out in black and white. खुद तो वो अपना ही मजाक उड़ाता था. तो he told me, नहीं बच्चे हमका वैसे करते थे ना, तो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म था. तो मैं पहले लोगों का इतना मजाक उड़ा देता हूं ताकि कोई मेरा मजाक ना उड़ा. And then it became a compulsive behavior which he cannot control. And why this behavior came? Because of prejudice. Now, when a person does something against his own values, he loses self-esteem. And because of prejudice, he was doing something which was against his own values. क्योंकि वो आदमी किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, मगर पहुंचा देता था. And the last but not the least is something called guilt. See, unfortunately, in our country, if you make the smallest of mistakes, you are made to feel so guilty about it. And we have been making small or big mistakes, right? So can you imagine how many negative marks we have given to ourselves because of all these stupid things that have happened to us in our life? So for no fault of our own, we have stopped remembering who we are. A wonderful, magnificent, extraordinary human being. Okay? Every time you make a commitment and you break it, what happens to your self-esteem? So a lot of people ask me, how do I raise my self-esteem? I said, stop believing what you started believing when you were 4 years old. You're not the same person anymore. And keep doing things which will reinforce your self-esteem. Every time you do what you say, make small commitments and keep them. And then acknowledge them for it. Acknowledge yourself for it, I mean to say. So before I open it up for question and answer session, it's a small little story I'd like to tell you. See, once upon a time, there was this little boy. बड़ा शरारती बच्चा था. तो उसको एक शौक था, वो पेड़ों पे चढ़ जाता था और वहां पर चिड़िया के घोंसले अगर मिलते थे उसको और उसके अंदर अंडे होते थे, वो निकाल के नीचे फेंक देता. तो ये रोज पेड़ों पे चढ़ने से ना बोर हो गया एकदम. ऐसे बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं. सो वन डे ही डिसाइडेड टू क्लाइम अ क्लिफ. चट्टान पे चढ़ गया एंड देयर ही फाउंड अ नेस्ट ऑफ अ गोल्डन ईगल. Now there were 2 eggs in it. So he said, आज क्या करें? He was going to throw them down.
But then he changed his mind. He took one egg, put it in his pocket, and he came home. Whole day he played, and he completely forgot that there is an egg in his pocket. Suddenly in the evening remembered, oh, what do I do with this egg? So he looked around and he found a chicken coop. Murgi khana tha. So he took this egg and put it along with the eggs of the chicken. Now mother hen does not know the difference between her own egg and the egg of the of the eagle. So she would sit on it. And one day this little eaglet hatched along with the other chicken. And mother hen did not know the difference. So she treated everybody like her own chicks. So he used to play with the chicks, go everywhere, scratch the dust, eat the worms and all that, whatever chicken do. And he grew up believing that he's a chicken. So one day all these chicken went to the forest. And there this fellow saw this beautiful bird in the sky, doing a beautiful dance in the sky, flying, swooping up and down and all that. So he looked at that bird and he said, who's that bird? So all the other chicks said, you don't know who that bird is? That is the golden eagle, the king of the sky. So this little eaglet who thought he's a chicken, he said, oh, one day I would like to be like him. And all the other chicken, they laughed at him and they said, you Punjabi chicken, you Delhi chicken, you Haryana chicken, you Mumbai chicken, you're only fit for the badi tandoor. So this little eaglet, because he believed that he's a chicken, he lived a life of a chicken and died the death of a chicken, never realizing that he's a wonderful, magnificent, extraordinary golden eagle, the king of the skies. So your choice is, you want to see yourself as a wonderful, magnificent, extraordinary human being or a chicken? So thank you very much. Any questions? Thank you very much. All right. So nobody has any questions? Wonderful session. Wonderful. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so see you next week, I suppose. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Sandeep ji, for a wonderful session. Thank you, everyone. See you tomorrow at 8. Thank you. Not Sandeep. Thank you.